Assalamu alaikum. आज हमारे साथ है Dr. Summaiya Tariq, who is an additional police surgeon at the Jinnah Postgraduate Medical Center. Assalamu alaikum. How are you doing? Wa alaikum salam. I'm so glad to be here. Thank you so much for having me. So Dr. Summaiya, please introduce yourself. I'm currently working as additional police surgeon, Jinnah Postgraduate Medical Center, Karachi. And I've also had the honor, I'm still serving actually, still honored of serving on the Parliamentary Committee for Anti-Rape Investigation and Trial Act 2021. In addition to that, I'm also serving on Sindh Medico-Legal Reforms Committee and Sindh Forensic Science Lab Committee. I've done my post-graduation in forensic medicine, diploma in medical jurisprudence actually, and currently I'm pursuing FCPS in forensic medicine from JSMU. I've had a medical legal career of over 20 years and starting from the grassroots levels. I'm a CMR, like clinical management of rape specialist. In addition to that, I'm a master trainer for capacity building of gender-based violence personnel, people who handle GBV cases. I'm a capacity builder for them. So that's about me. Thank you so much for taking time out of your busy schedule to actually come on our set here today. We are going to be focusing a little bit about your work as a medical legal officer, starting off with what it is that you do, the work that you do, और उसकी क्या अहमियत है? Okay. I'm honored that you're giving me a chance to explain what I do. I started off as a medical legal officer, which is like a person who converts medical evidence into legal evidence. Simply put, in a nutshell. Converting or translating the medical language into a legal language is the job of a medical legal officer. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपका जो काम है एज एडिशनल पुलिस सर्जन, ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ओके, मेरा जो काम है एज एडिशनल पुलिस सर्जन, एसेंशियली मैं हेड कर रही हूँ जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर का मेडिको-लीगल जो सेक्शन है वो, एंड उसमें आई हैव लाइक MLOs and WMLOs working under me, and I am supposed to supervise वो क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं. I'm supposed to give them guidance उनके administrative issues. I'm supposed to basically I'm overseeing everything that is being done in the medico-legal section. आप जरा थोड़ा सा बता सकते हैं कि medico-legal system से आप के बारे में जब आप बात करती हैं तो what do you exactly mean by that? Medico-legal system जो है ना, तिब्बी कानूनी, so anything जो तिब्बी है या मेडिकल है, अगर उसको मुझे लीगल लैंग्वेज में आपको बताना है यानी ट्रांसलेट करना है फॉर द कोड ऑफ लॉ, तो वो मेडिको लीगल कहलाता है. अब मेडिको लीगल में क्या क्या चीज़ें आएंगी? मेडिको लीगल में होमिसाइड्स आएंगी यानी मर्डर्स. मेडिको लीगल में आपके पास एक्सीडेंट्स आ जाते हैं, फिर सुसाइड्स आ जाती हैं. उसके बाद ऐसे जुराइम जो पर्सन के अगेंस्ट होते हैं यानी कम्युनिटी के अगेंस्ट होते हैं, जिसमें रेप भी है, जिसमें असॉल्ट भी है, जिसमें सोडोमी भी है, जिसमें ट्रांसजेंडर्स के साथ बदसलूकी भी है, बच्चों के साथ ज्यादती भी है, चाइल्ड अब्यूज भी है. एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो कोर्ट तक जाएगा, जो कि मेडिकल कंडीशन होगी, जिसको मुझे कोर्ट के लिए ट्रांसलेट करना पड़ेगा इनटू कोर्ट की लैंग्वेज, दैट इज मेडिको लीगल. जरा आप थोड़ा सा इसका प्रोसीजर के बारे में बता सकते हैं? देखिए, इसमें होता क्या है कि अगर मैं सिंपल असॉल्ट केस की बात करूं, जैसे लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो लोग थाने चले जाते हैं, थाने से जाके लेटर ले लेते हैं, और लेटर लेने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए दे कम टू द मेडिको लीगल ऑफिसर, और फिर उनका मेडिको लीगल सर्टिफिकेट बनता है. उस सर्टिफिकेट में उनकी सारी इंजरीज लिखी जाती हैं, और इंजरीज लिखने के बाद उनके एक्सरेज, उनके सीटीज और उनके अल्ट्रासाउंड्स वो सब कराए जाते हैं, और फिर एक ओपिनियन दिया जाता है कि जो इंजरी उनकी, जैसे हमने कहा कि ये मेडिकली ये इंजरी एक इंसाइज्ड वुंड थी, और उसके बाद हमने बताया कि जी ये लीगली इस इंजरी की क्लासिफिकेशन क्या होगी, ये जरा गैर जायफा बादिया होगी या शजाय मुदिया होगी, क्या चीज़ है ये इंजरी. सो बेसिकली मैं इंजरी को मेडिकल लैंग्वेज से ट्रांसलेट कर दिया मैंने लीगल लैंग्वेज में समझने के लिए कोर्ट के. अच्छा, ज़रा हम ये बताते हैं कि जो डिलेज आते हैं, हाउ लॉन्ग आर दीज डिलेज एंड हाउ एक्सेप्टेबल इट इज़ for having a certain amount of days for this procedure? जो आपने procedure हमें define किया है, थोड़ा बहुत जो आपने बताया हमें. Rape case. हाँ जी, बिल्कुल. Rape cases are a totally different scenario from regular assault cases, क्योंकि उसमें हम एक time bar पे काम कर रहे होते हैं. Delays जो आएंगे वो सिर्फ on part of medical legal examiner नहीं आएंगे, delay आएगा on part of the victim as well. उन्होंने कितना time लिया
पुलिस तक आते आते या मेडिको लीगल एग्जामिनेशन के लिए आते आते, तो पहला डिले तो वहां हो गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन फॉरन, दैट डिपेंड्स। फिर पुलिस के पास अगर वो आते हैं तो पुलिस उस विक्टिम को मेडिको लीगल एग्जामिनर के पास कब तक लेकर आती है, वो आ गया आपके पास सेकेंड डिले। वो हो सकता है 1 घंटे में ले आए, हो सकता है 2 घंटे, हो सकता है उस दिन वापस भेज दे के दूसरे दिन चलेंगे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अवेलेबल नहीं है या थाने का स्टाफ शॉर्ट है, व्हाटएवर द रीजन, फॉर व्हाटएवर रीजन हो सकता है वो डिले सेकंड हो गया। थर्ड डिले आएगा ऑन पार्ट ऑफ द मेडिको लीगल एग्जामिनर। तो आप सोचो कि मैं इन अ फ्रेम ऑफ थिंग्स, जब मैं फ्रेम की बात कर रही हूँ तो मैं डिलेज में मेरा लेवल आ रहा है लेवल 3 पर। वो क्यों डिले आएगा, हो सकता है उस वक्त वहाँ मेडिको लीगल ऑफिसर अवेलेबल ना हो, या हो सकता है स्टाफ इतना शॉर्ट है कि जो कि हमारे पूरा एक जनरल एक सिचुएशन ही ऐसी है कि मेडिको लीगल स्टाफ बहुत कम होता है। सो वो आया तीसरा डिले। आइडियली स्पीकिंग a rape victim or a sodomy victim should be examined as soon as possible. लॉ ये कहता है कि within 6 hours हो जानी चाहिए एग्जामिनेशन, ठीक, मगर अगर नहीं हो पाती तो इसका मतलब ये नहीं है कि ना की जाए, किया जाना भी जरूरी है। So we have a time frame of about 3 days, 5 days and 7 days. तो 3 दिन के अंदर हो जाए, चलो ठीक है, सेकंड बेस्ट हो गया। 5 दिन के अंदर हो जाए और भी थोड़ा सा डिले है, मगर 7 days तक तो हो ही जानी चाहिए एग्जामिनेशन। मतलब उसके बाद फिर इंजरीज और बाकी चीजें और सैंपल्स, उनकी जो वैलिडिटी होती है ना, या उनकी जो कलेक्शन प्रोसीजर होता है, वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट होता जाता है। जी, आप जरा इस बात से एग्री करेंगी कि जितना डिले होता है उतना ही एक तरीके से इट इज डेथली फॉर द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव दीज थिंग्स? यस, इट इज। I totally agree with that, because जितना डिले हो रहा है, देखें, we are talking about an offense जिसके सिम्टम्स या साइंस जो हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो विक्टिम है वो अपने आप को वॉश भी कर रही होगी, या बच्चा है उसको वॉश भी कराया जा रहा है, ठीक है, और फिर यूरिनेशन का प्रोसेस, डिफिकेशन का प्रोसेस, उसकी वजह से जो सैंपल्स हैं वो भी लूज हो रहे हैं। अब और फिर बॉडीली इंजरीज जो आई हैं वो भी 5-7 days में फेड होना शुरू हो जाती है। So this needs to be treated as a case most urgent. जितना जल्दी एग्जामिनेशन होगा, चांस है कि उतना ही ज्यादा इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन के लिए फाइंडिंग हमें मटेरियल मिल जाएगा। आई थिंक इससे हम ये भी बता सकते हैं कि जो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट इशू होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है व्हेन इट कम्स टू दीज इन्वेस्टिगेशंस? ओके, इसमें कॉर्नरस्टोन बनता है किसी भी रेप या सॉडमी के इन्वेस्टिगेशन की, या मेल रेप जिसको सॉडमी का हम कहेंगे, तो उसमें ये होता है कि आपके पास कॉर्नरस्टोन जो है ना वो मेडिको लीगल सर्टिफिकेट है। इट्स नॉट जस्ट कि मतलब, let me explain it to you. See, this is the investigation, the entire thing. अगर मैं मेडिको लीगल की, तो मेडिको लीगल आपके पास यहाँ है on one, one corner. Then we have the police investigating officer here. Then you have the prosecutor over here, and in between we have the judge. So this is how it becomes a triangle. So मेरा cornerstone है। अगर मैं अपना काम कर लेती हूँ और पुलिस वाला नहीं करता, तो प्रोसिक्यूशन के पास कुछ नहीं होगा प्ले करने के लिए, ठीक है। सो इट इज ऑल इंटरकनेक्टेड। फॉर कन्विक्शन और एक्विटल हमें चाहिए, तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए मेज तक लाना जल्दी से जल्दी बहुत जरूरी है। इसीलिए जो एंटी रेप क्राइसिस सेल्स का जो पूरा एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021 है, जो उसको डिस्क्राइब करता है, वो ये करता है कि जो एंटी रेप क्राइसिस सेल होंगे उनमें पुलिस की तरफ से जो डिले, या विक्टिम पहले पुलिस के पास जाए, फिर पुलिस के बाद पुलिस मेरे पास लेकर आए या मेडिको-लीगल सेक्शन में लेकर आए, सो वो चीज को हमने खत्म करके कोशिश ये करेंगे कि वहीं पर पुलिस की अवेलेबिलिटी हो, सो विक्टिम डजंट हैव टू गो एनीवेयर। विक्टिम को पुलिस थाने में जाते हुए, पुलिस स्टेशन में जाते हुए भी थोड़ा सा एक अजीब सा फीलिंग होता है कि वो अकेली जा रही है या बच्चा है उसको कोई लेके जा रहा है। तो अगर वो चीज को कि वो दूर है, तो करीब तरीन हॉस्पिटल में जहाँ ARCC मौजूद है वहां पर विक्टिम आपका जा सकता है, और वहां पर उसको अंडर वन रूफ ये सारी चीज मिल जाएगी। अच्छा, आपने बात की एंटी रेप और ट्रायल एक्ट की 2021 की, इसके बारे में आपकी क्या राय है? I've had the honor of serving on the parliamentary committee for this, जब ये ordinance आता, और अब implementation committee का मैं part हूँ, so I feel that it is a step in the right direction. इसका ये है कि implementation will be very tricky, yes, मगर चूंकि implementation committees जो हैं वो बनाई गई हैं, और मतलब we are supposed to make sure that it is implemented in spirit, not just on papers but also in spirit. So yes, इसमें special courts का एक किया कि GBV court specialized हो,
और उसके बाद सिंध में ऑलरेडी हमारे पास जीबीवी कोर्ट्स नॉमिनेटेड हैं, नोटिफाइड है, ठीक है। फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हों वो स्पेसिफिकली जो हैं वो जीबीवी के लिए ट्रेंड हो, स्पेसिफिकली ट्रेंड हो। अगेन मैं सिंध गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ बिकॉज आई एम अ पार्ट ऑफ दैट। तो वहाँ पर 288 उन्होंने अभी नोटिफाई किए थे पुलिस में 288 जीबीवी इन्वेस्टिगेटिंग। अच्छा, जरा बता सकते हैं कि जीबीवी से आपका क्या मतलब है? जेंडर बेस्ड वायलेंस। आई एम सॉरी, मुझे पहले बताना चाहिए था। जेंडर बेस्ड वायलेंस का सिंपल मतलब ये है कि जेंडर की बेसिस पे किसी के खिलाफ किसी पर जुल्म करना। Like if I am a male or I am a female and I am being punished or there's a crime being committed against me because of my being a male or my being a female or my being a trans, so that's a gender based violence. इसमें assault, physical assault, इसमें mental torture, इसमें sexual assault, सब चीज आ जाती है. It's an umbrella term which will encompass everything. Domestic violence भी, because domestic violence अगर एक female gender को target कर रहा है तो it becomes a part of GBV. So it's basically an umbrella term. ये gambit है पूरा जिसके नीचे ये सारी violent acts आ जाते हैं which target a specific gender. अच्छा, आपको क्या लगता है कि जब ये इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है और आपको पता है कि ये खास कोई जीबीवी केस के बारे में है, तो आप क्या चीज़ें अपने माइंड में रखते हैं when you are carrying out this investigation in particular? जीबीवी केस में अगर आप थोड़ा सा स्पेसिफाई हो जाओ तो मैं रेप केसेस की बात Yes, if you are talking about rape cases, अगर हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जहाँ पर जेंडर सेंसिटिविटी की बात आ जाती है. So what kind of steps do you think you need to take? What kind of special steps do you think you need to take when you're carrying out, especially वो investigations जो GBV के खास तौर पर जो rape की होती है? Okay. So basically I've been training not only IOs but also conducting trainings of prosecutors and judges as well as medico-legal officers for almost 5 years now. So मेरे ख्याल में जो GBV की sensitization, GBV के against जो वॉर है हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं उसमें जेंडर सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर मैं जेंडर सेंसिटिव नहीं हूं तो मैं उस चीज को समझूंगी ही नहीं, मेरे अंदर वो सेंसिटिविटी नहीं होगी. इसके लिए मेरा तो सजेशन यही होता है दैट वी शुड इंक्लूड this gender sensitization in the very curriculum when all of these people, the stakeholders are being trained, like medico-legal officers, like prosecutors, like judges, like investigating officers, like support staff, even जो थाने का सपोर्ट स्टाफ होता है वो भी, क्योंकि वहां अगर जेंडर सेंसिटिविटी मिल गई ना तो बहुत सारे केसेस में बहुत आसानी हो जाएगी. सी विक्टिम को सर्वाइवर तक लाने के लिए all of these people are involved. और उसकी सिर्फ हमारा टारगेट ये नहीं है कि हमने कन्विक्शन पे लेके जाना है. हमारा टारगेट ये है कि विक्टिम को हमें सेंसिटाइज करके विक्टिम की इतनी हेल्प करनी है कि वो सर्वाइवर में कन्वर्ट हो सके. तो वो अगर मैं सिर्फ एक ही एस्पेक्ट पे बात करती रहूंगी तो फायदा कुछ नहीं है. We need to be sensitive to. देखिए, हमने बात की है इस एंटायर प्रोसीजर की, दिस एंटायर इन्वेस्टिगेशन की जो हमने बात की है. आपको क्या लगता है कि इसमें लैक ऑफ रिसोर्सेज, हाउ डज दैट play a role in this? Okay, तो दो फिर resources की बात करें ना, human resource and then the finances involved or maybe the logistics involved. Human resource तो I'm sorry to say this, पूरे पाकिस्तान की एक ही हालत है. थोड़ा सा हो सकता है कहीं बेहतर हो, थोड़ा सा कहीं बेहतर ना हो. मेडिको लीगल ऑफिसर्स नहीं है और अगर हैं तो ट्रेन नहीं है. वन, फिर हमारे पास मेडिको लीगल असिस्टेंट्स नहीं होते. वी डोंट हैव नर्सेज, we don't have ward boys, we don't have specific people who are working as medical legal assistants. हमारे पास mortuary assistants नहीं होते because postmortem is a part and parcel of one of our job. उसमें पहला तो हो गया human resource. दूसरा है फिर finances ऐसे important है कि अगर मुझे एक sample लेना है और मुझे swab चाहिए, swab sticks चाहिए, और अगर मेरे पास वो swab sticks provided नहीं है, swab sticks cost around like anywhere between 15 to 25 rupees. तो वो अगर मेरे पास स्टिक अवेलेबल नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊंगी? Where will I get? सैंपल लेने के लिए मुझे स्टिक चाहिए, मुझे उस सैंपल को सील करने के लिए मुझे क्लॉथ चाहिए, मुझे उस कपड़े को, जो मैं कपड़े लेती हूँ, अगर मैं कपड़े सील कर रही हूँ तो कपड़े सील करने के लिए भी मुझे एक बड़ा कपड़ा चाहिए, या मुझे कागज का बैग चाहिए, मुझे उसको ड्राई करने के लिए ड्राइंग कैबिनेट चाहिए. चलो ड्राइंग कैबिनेट छोड़ो, मुझे एक सेपरेट एरिया चाहिए, एक कमरा अलग चाहिए. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इन्वॉल्व्ड. ये सारी जो नेसेसिटीज हैं, अगेन लाइक आई सेड, ARCC का जो मैंने पूरा बनाया था वो 2 रूम का वो था, उसमें हमने ये सब चीजें डाली थी कि ह्यूमन रिसोर्सेज भी, उसमें हमारी रिक्वायरमेंट, नेसेसरी बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है वो भी, एंड प्लस उसमें जो बहुत बड़ी चीज है ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग.
अगर हम इस पॉइंट पे अगर हम ख़ास तौर पे बात करें तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी राय में मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपने की है, ह्यूमन ट्रेनिंग की जो आपने बात किया है। अगर हम बात करते हैं पुलिस ऑफिसर्स की तो और इन्वेस्टिगेशन की, आपको पता है कि विक्टिम से भी बात करने का एक तरीका होता है। ऑब्वियसली जब हम जेंडर सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि इतने ज़्यादा ट्रेनर्स हैं अवेलेबल ऑन डिमांड टू एक्चुअली ट्रेन hundreds of people, or at least even just a few of these police officers? No. We need to work on first building up our manpower. The manpower regarding the trainers. पहले हमें वो build up करना पड़ेगा। जब तक हम वो build up नहीं करेंगे, अच्छा उसमें भी फिर हमें quality check and वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी। बहुत like it will be first we have to train the trainers, then we come down to the actual training. Yeah. So because I'm working with Sindh Judicial Academy and then I'm working with Sindh Police Academy, तो उनके साथ भी काम करती हूँ, ट्रेन कराती हूँ मैं। But ये कि उसमें मुझे I feel that there's a big lacking. We need more trainers. We need people who are gender sensitized themselves so that they can train the stakeholders. अगर इसका कोई mechanism हो सकता है, what mechanism would you propose as a person who has so much experience in this field? Training of the trainers, TOTs. Frequent TOTs all over Pakistan, not just in one area or the other. और especially जो वो वाले जिन पे outreach हमारी बहुत मुश्किल है वहाँ पर, क्योंकि देखो we will work in the cities, हम शहर तक तो रहेंगे, but what about that आयो जो से शदादपुर में बैठा हुआ है, say he's at a place like one of those far flung areas जहाँ तक बहुत कम लोग जाते हैं, what about those? वहाँ पे भी मुझे वहाँ भी तो केसेस हो रहे हैं ना, तो वी नीड पीपल ओवर देयर, हमें चाहिए वो। ये ऑल ओवर पाकिस्तान होगी, पहले ट्रेनिंग की TOTs होंगी यानी ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स होगी, फिर उन ट्रेनर्स को उन एरियाज में भेज दिया जाए। तो दिस इज हाउ इट विल वर्क। आई थिंक जो हमने प्रोसेस जितना भी हमने बात की इस प्रोसीजर के बारे में, हम इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ये रिस्पॉन्सिबल काम है, इतना डिलिजेंस से होना चाहिए। In your experience as a medical legal officer and somebody who has experience in this profession and field, do you think people are discouraged from entering this particular area? Medical legal officers? Yes. So there's a strong repulsion towards becoming a medical legal officer. I don't know, maybe it's because of our frequent summons to courts where we might have to go 3 to 4 times for one case. It could be that, or our interaction with police officers, or the constant nature of, the constant depressive nature of the crimes that I see every day. So all three are at play. So because I get to see all sorts of crimes against humanity, and like I said, literally हम लोग bowels में बैठे होते हैं, bowels, of the society. That's where we get to see all the dirty stuff. तो बहुत ज़्यादा वो है, resistance है on part of the doctors to come into this field. बहुत ज़्यादा, they would prefer, a career job, maybe become a cardiologist, maybe become a dermatologist, but nobody would be interested in becoming or pursuing forensics as a medical practitioner, a forensic practitioner. I take pride in saying that I'm a forensic practitioner. I take pride because I've worked very hard. I have learned the trade. I have understood what it needs, and but I have yet to see someone, I need someone. Come to me, I'll train you. Yeah, so that's what I think. आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि क्या सूरत हाल है हमारे forensic labs की? If you're talking about the nation, if you're talking about on a local level, what do you have to say about them? So एक तो आपके पास पंजाब Forensic Science Lab है, which I must say is doing a commendable job. फिर उसके बाद हमारे पास, because I've served on the committee, I am serving on the committee of Sindh Forensic Science Lab, and we hope to have a lab soon. Soon as in I'm not going to give any time frame when that will happen. But currently हमारी labs are ill-equipped. जैसे हमारे पास DNA का सेटअप है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में, ICCBS का, फिर DNA का सेटअप है हमारे पास, DNA के लिए हमारे पास फिर एक और लैब है हमारे पास जमशोरों में, एंड यू हैव PFSL, मगर बलूचिस्तान और KP में ऐसा कुछ नहीं है, और प्लस हमारे पास केमिकल एग्जामिनर्स होते हैं. सो इसेंशियली देयर आर लाइक, जो अगर आप फोरेंसिक साइंस लैब की बात करो ना, तो उसमें 6 to 7 डिविजन्स होते हैं. सो कहीं भी सिवाय PFSL के हमारे पास पूरे पाकिस्तान में नहीं है. So you can judge by imagine the burden on those people who are actually doing it. So we have backlog of cases. और फिर जब कोई केस हमें फौरन चाहिए होता है, तो obviously there's a lot of jumping to be done. So
finances भी हमारे restricted होते हैं, and there's a lot of work to be done. Work needs to be done. अच्छा, तो हमने बात की इसके बारे में. Obviously the burden is understandable. Tell me about DNA. Let's talk about DNA for just a second here. What is DNA and how is the evidence essentially preserved for these cases and investigations? Okay, DNA is a double-edged sword. DNA is basically deoxyribonucleic acid. मैं double-edged sword पे थोड़ी देर में वापस आती हूँ. It's basically the blueprint of who I am or who you are. And when I touch this seat or chair, I am leaving my touch DNA over here. So I'm like leaving my, my print behind. I'm telling everyone who would care to take a swab up from here or take the entire chair to the PFSL and find out whether I sat here or not. So it works on the Locard's principle of exchange, meaning when two things come in contact with each other, they are bound to leave a trace. Like जैसे गाड़ियां दो टकराती हैं, तो इसका रंग उस पे चला जाता है और उसका रंग इस पे चला जाता है. इसने अगर अंदर डेंट मारा होता है तो वो अंदर जाएगा and then वहां पर रंग थोड़ा रह जाएगा और इस पे उसका रंग आ जाएगा. यही प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है सारा सैंपल कलेक्शन में, जिसमें DNA becomes the sort of say the go-to or the whiz word or maybe the जादू की छड़ी. Why do I call it a double-edged sword? Because इस जादू की छड़ी की वजह से we feel it is our answer to everything. We overlook, or our investigating officers overlook, a lot of corroborative evidences. DNA जब नहीं होता था, क्या उस वक्त convictions नहीं होते थे? जब DNA नहीं होता था तो क्या convict तक, मतलब accused को ये साबित हम नहीं कर पाते थे कि नहीं भाई ये accused actually जो alleged accused है he should be acquitted? होता था. तो DNA को इतना importance दे देना कि it takes precedence over all corroborative evidences is not right. Is not right. क्यों? क्योंकि we are talking about minuscule amounts of samples, minuscule amount of samples. Like एक drop का maybe 10th हिस्सा, एक water drop का, छोटे से water drop का 10th हिस्सा, और maybe उससे भी छोटा. So I am depending my entire case on that DNA report. और अगर मैंने सही जगह से सैंपल कलेक्ट नहीं किया, अगर मैंने उसकी प्रिजर्वेशन सैंपल की सही नहीं की, या उस सैंपल प्रिजर्वेशन को ठीक कर दिया मगर वो टाइम पर लैब में नहीं पहुंचा, और अगर लैब का जो इक्विपमेंट था वो सही कैलिब्रेटेड नहीं था, सो आई एम लीविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू चांस. तो इसके लिए जरूरी ये है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स या corroborative evidences should be given equal, if not less, importance than DNA. DNA part है, yes, it's a big achievement. It's a big, in prosecuting a case, it's a big thing. If you have a positive DNA report, so it's a sure shot case. You are going to get a conviction. Okay? But if it's not positive, does that mean that we will overlook all the corroborative evidences? That's why I call it a double-edged sword, because it works both ways. Stepping back to what we said about the involvement of the police, अगर हम पुलिस की बात करें, are they well equipped to handle DNA evidence? DNA evidence handling requires swabs. It requires temperature, correct temperature. It requires correct preservation techniques, and it requires correct handling and as soon as possible dispatch to the lab. So, in a nutshell, what we require are swabs. That's it. The rest is here. SOPs, standard operating procedures, which need to be followed. Again, मैं वहीं पर घूम के आ जाती हूँ training पर. We train the investigating officers in this art. And सिर्फ एक ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता. Refresher courses, फिर frequent testing. जब आप टेस्ट करोगे लोगों को, चाहे वो मेडिको लीगल ऑफिसर्स हो, चाहे वो IOs हो, उनको हमें टेस्ट भी करना है, चाहे वो प्रोसिक्यूटर्स हो, उनको हमें हमसे पूछना है कि ये सारे सवालात पूरे किए हैं या नहीं किए हैं. आई हैव डेवलप्ड अ चेकलिस्ट फॉर दिस. इनके लिए मैंने डेवलप किया है ये जो ARCC का पूरा प्रोटोकॉल बन रहा है, उसमें IOs के लिए भी चेकलिस्ट डेवलप किया है कि what are the things that investigating officer needs to do to collect forensic evidences correctly, and what is the checklist that a medical legal officer needs to follow. वो चेकलिस्ट फॉलो होनी चाहिए. वो फॉलो होगी, प्रिजर्वेशन भी सही होगी, डिस्पैच भी सही होगा, चीजें भी सही होंगी, वी विल गेट अ बेटर
conviction rate. I think सारी चीज़ों को देखते हुए we boil down back, we come back to the same point, which is essentially the training aspect of it. Yes. And back to the grass root of every sort of thing, which is the investigation, how it starts. And we talked about the police, we talked about the medical legal system, and the different approaches that people have to it as well. My question to you is going to be, are there any ethical qualms that you have to face in terms of like the medical legal, as an officer there? What are the ethical dilemmas maybe that you've had to face? Here, to be honest, they have improved. मतलब ethical considerations तो बहुत ज़्यादा हैं. Ethical consideration में पहली चीज़ ये आ जाती है consent. Consent की value. Like I cannot touch a person without that person's consent. अगर वो बच्चा है तो उसका तो मुझे एसेंट लेना ही लेना है, साथ ही साथ उसके पेरेंट्स का भी मुझे consent चाहिए. अगर वो अडल्ट है लाइक 18+ तो भी मुझे उसका consent चाहिए. फिर एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट consent किस चीज के लिए? Consent सवाल जवाब के लिए, consent फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, consent प्राइवेट पार्ट्स की एग्जामिनेशन के लिए, consent फॉर कलेक्शन ऑफ सैंपल्स, एंड consent that is one of the biggest ethical dilemmas. उसके बगैर मतलब इंटरनेशनल कानून ये कहता है कि जी मेरा एक पेज का इतना लंबा consent का फॉर्म हो और मेरे पास जो मेडिको लीगल सर्टिफिकेट होता है उसमें एक छोटा सा डब्बा होता है जिसमें साइन करना होता है और अंगूठा लगाना होता है. आई एम ड्यूटी बाउंड ethically and legally to tell the person whom I am examining कि मैं क्या करने जा रही हूँ. और अगर वो नहीं मानती या नहीं मानता बच्चा तो मुझे उसको काउंसिल करना है, टेलिंग हिम और हर कि अगर मैंने इस वक्त सैंपल्स नहीं लिए तो दे विल गेट लॉस्ट, और 2 दिन बाद अगर वो आते हैं तो इट्स अप टू मी. अब ये काउंसलिंग का जो सेशन होता है ना, इतना टाइम नहीं होता गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास. दे आर ओवरवर्क्ड. तो फिर आप क्या करते हैं? फिर यही करते हैं कि बस साइन करा लेते हैं, दैट्स इट. सो ये मेरा एथिकल बहुत बड़ा एथिकल डिलेमा है. फिर हमारे पास सेल्फ हार्म के केसेस में अक्सर ऐसा होता है कि किसी की बच्ची है, किसी का बच्चा है. मैं एग्जांपल दूंगी, गुस्से में आ गए, लड़ाई झगड़ा हो गया घर में, जाके कुछ जो पड़ा हुआ था वो पी लिया, एंड देन दे ब्रिंग दैट चाइल्ड, दैट बॉय, दैट गर्ल टू अस इन द ER इमरजेंसी रूम में. अब हमारा काम क्या है, बाय लॉ या ड्यूटी बाउंड के हमें उनका केस लिखना ही लिखना है, बिकॉज वो एक मेडिकल कंडीशन भी सीरियस है, प्लस लॉ भी कहता है कि जी सेल्फ हार्म इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द आइज ऑफ द लॉ, इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस. ठीक है. सो अब फैमिली आके मुझे कहती है कि प्लीज ये केस ना लिखें, प्लीज ये केस ना लिखें, बिकॉज इट्स अ बिग टैबू एज वेल. हो सकता है उसको ऑस्ट्रेसाइज किया जाए, उस बच्ची को या बच्चे को, कि इसने तो खुदकुशी की कोशिश की है. इट्स अ बिग टैबू. मतलब वहां पर हम बिल्कुल उसमें होते हैं कि करना क्या है, what to do and what not to do. मैं उसमें नहीं जा रही कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, बिकॉज वो फिर हर किसी का अपना अपना होता है. I think ये जो सवाल है ये हर किसी के माइंड में आता है जो वो पूछना चाहते हैं फ्रॉम अ मेडिकल लीगल ऑफिसर, probably because काफ़ी ज़्यादा इस पर डिस्कशन भी हुई है काफ़ी रिसेंट ईयर्स में. I'm sure you must know about it as well. I am pretty sure this is one of those situations that puts you in a difficult position, position में डाल देती है आपको. Do you think that suicide is seen as something evil and it is presented by our media as something evil, as opposed to somebody crying out for help? Media has not played a very positive role. Media has not played a very positive role. जितने मैंने देखे हैं, जो भी मीडिया में ड्रामे वगैरह देखती हूँ, वो अगेन वो हमारा आउटलुक होता है हमारी सोसाइटी का. हमारी सोसाइटी इसको देखती ही ऐसे. मतलब जिस फैमिली में मैंने देखा है, जिस फैमिली में सुसाइड हो जाए और कंप्लीटेड सुसाइड हो, उनको ऐसे शन किया जाता है जैसे पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया है. लोग अफसोस करने नहीं जाते. मतलब दैट, और अगर अटेम्प्टेड सुसाइड है तो वो तो क्राई फॉर हेल्प है. वी नीड अ चेंज इन द माइंडसेट. जब तक माइंडसेट चेंज नहीं होगा ना, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि जो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है वो एक्चुअली चीख के बता रहा है कि प्लीज मेरी कोई मदद कर दो, प्लीज मेरी कोई मदद कर दो, प्लीज मेरी कोई बात सुन लो. अच्छा, एक हमारा और भी बहुत बड़ा, वो हमारा नहीं वो पूरी दुनिया का मसला है कि आपने अगर मुझे कोई बात बताई ना तो मैं जाहिर है मैं अपने एंगल से उस पर सोचूंगी. जबकि किसी सुसाइडल जिसमें आपको सुसाइडल टेंडेंसी मिल रही होती है, उसकी बात आपको अपने एंगल से नहीं सुननी होती, उसकी बात आपको उसके एंगल से सुननी होती है. आप उसको मशवरे दे सकते हैं, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, मगर आप सोचो कि वो कितना हेल्पलेस है.
that जिंदगी खत्म कर लेना उसके लिए आसान है as compared to जिंदगी को face करना. There's one particular thing that I would like to point out in terms of the medical legal examination that happens, the two-finger test. Let's talk about that. Let's talk about the judgment which was given by now Supreme Court Justice Aisha Malik, jointly decided for the two writ petitions that were filed. She talked about how it was not medically or legally necessary. Do you agree to that? How important do you think it was for that test to be abolished? First of all, Madam Aisha is like close to heart. Close to heart in the sense that, you know, yay, women power. So, okay. And second thing, two-finger test. When I started studying, doing my post-graduation in forensics, diploma in medical jurisprudence, I started reading about it. We were as a regular sort of, it was a regular practice when I was a medical legal officer to just practice it. And mention the words, you know, whether the woman is, and this would essentially, I would essentially be opining on the woman's character on the basis of the tone of her vagina. So I found that quite insulting, and this I started studying in 2015, and by the year 2016 I was not using these terms because see, two-finger test essentially is a medieval practice. It has nothing to do with medicine. It has no effect or is not caused by rape of anyone. It's a normal process, two-finger, whether the vagina is loose or whether it's tight. It's a normal process of life through which a woman may go through from infancy to old age. That's a normal process. That has nothing to do with. What it did was that it took the onus of looking for injuries. It took the onus off from the medical examining WMLO of collecting samples, and it took the onus of the WMLO again to take the pains of documenting the injuries, whether or not rape has occurred. It was very easy to write down vagina loose. She is used to the act, and that's it. उसमें क्या हुआ कि कानूनी शहादत का कोई है 4A है कि 4B है, you will be knowing that better. वो रिपील हुआ. जब वो रिपील हुआ तो हमने कैरेक्टर पे बात करनी छोड़ी. उस रिपीलिंग के बाद तो इसकी तब तक जब तक वो रिपील नहीं हुआ था तब तक ये क्लॉज यूज होता था to assess, to judge the character. Don't you think that this also is an indication of how less we know about female anatomy? Yes. Essentially as a whole. Because see, two-finger test, पहले मैं ये बताती हूँ, then we'll go to the female anatomy. Two-finger test essentially has no medical value. It has nothing to do with the act of rape itself. Plus, जो मैडम आयशा का ये आया पूरा फैसला और बाद में इसको सिंध हाई कोर्ट ने भी वो किया नताशा लखानी वाले केस में, एंड उसमें ये हुआ कि ओनस जो है ना अब वो WMLO पे आ गया कि फाइंड द इंजरीज, लुक फॉर द इंजरीज, और उसके लिए एनाटॉमी अंडरस्टैंड करना कि फ्रॉम अ बेबी टू अ 9-year-old to a 13-year-old to maybe a 24-year-old and maybe a 60-year-old. So we need to understand the anatomy. Acha, being a medical legal officer means that the person is a doctor. It's a taken. So why are we forgetting that? Yeah. Why can't I, being a medical legal officer, open up my books, my anatomy books? Why can't I study? See, that's where the pride in being a medical legal officer comes in. जब तक इसको career path नहीं बनाया जाएगा, तब तक हमें improvement नहीं मिलेगी. We need to turn it into a career path. Or we need people who understand the anatomy. We need people who take pains to understand the anatomy and how it affects on the findings in a rape victim. इससे ज़्यादा मैं मेरे ख्याल में इसको eloquently social media पर नहीं बता सकती. No, I think you've done a fantastic job at that. जो ये medical legal performa होता है, इसकी क्या importance होती है medical legal cases में और instances में? आप medical legal performa is simply the medical legal certificate. क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट हो रही हैं. डॉक्यूमेंट होने में उसकी नाम वगैरह तो जाहिर है, बायोडेटा एंड ऑल दैट, एंड कॉन्सेंट
उसका एक पोर्शन अलग, फिर थाना एंड यू नो द डेट दैट द पर्सन इज कमिंग एंड व्हाट आर वी रिकॉर्डिंग, उसका जनरल जो उस वक्त सेंसोरियम है या उसकी कॉन्शियसनेस का लेवल, उसका चलने का तरीका, उसकी इंजरीज ऑन द बॉडी, ऑन हिज और हर प्राइवेट पार्ट्स, सैम्पल्स जो हमने कलेक्ट किए हैं, वो सारी चीज़ें, एंड देन ऑब्वियसली द ओपिनियन, उसका रेफरल पाथवे कि हम उसको रेफर कहाँ कर रहे हैं, यानी मेडिकली या सर्जिकली या गायनी उसका एग्जामिनेशन हम कहाँ से करा रहे हैं, वो सब कुछ, या हम एक्सरे करा रहे हैं या हम अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं. सो इट्स एसेंशियली व्हाट अ मेडिको लीगल ऑफिसर हैज डन या हैज सीन या हैज ऑब्जर्व्ड या हैज इन्फर्ड फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन. ये वाला जो प्रोफार्मा है विच आई विल से कि मेरी 20 साल की मेहनत का जो निचोड़ है उसमें, this was done at the under the sort of supervision of Professor Farhat Hussain Mirza, my mentor who passed away last year. और मेरे सुपरवाइज़र भी थे, मेरे मेंटोर भी थे, और मुझे इस फील्ड में यहाँ तक पहुँचाने वालों में उनका बहुत बड़ा वो है. So I worked under his chairmanship in Sindh Medico-Legal Reforms Committee. वहाँ के लिए हमने ये बनाया, और जो पहला आप प्रोफार्मा देखोगे उसमें 4 या 5 लाइनें होती थी, and that was left at the sort of at the level of expertise of the examining doctor. वो हो सकता है बिल्कुल फ्रेश डॉक्टर हो कोई जिसको मेडिको लीगल का कुछ पता ही ना हो, वो अपने लेवल से लिखेगा. So our target was that we design a proforma which will work irrespective of the level of expertise, meaning we give you the information, or we give the examining doctor the required information that is required from that examination. So we changed that, and I'm sure मैं आपके साथ जब शेयर करूंगी तो आप देखेंगे उसमें फर्क कि एक बिल्कुल ऑलमोस्ट एक ब्लैंक पेज है और दूसरे पे इंफॉर्मेशन का एक bombardment हुई हुई है, like I need to know this, I need to know this, I need to know this, and then we've added pictograms to it. So any injury that we have mentioned will be drawn on the pictogram as well. So that's a further check. And we've added history to it. History in the sort of in the victim's own language. या उसके साथ जो लोग और हैं, अटेंडेंट जो हैं उसके, जैसे बच्चे अगर नहीं बता पाते तो उसके अटेंडेंट ने हमें क्या बताया. So that takes sort of that takes it to the level of either the dying declaration if the victim does not survive, and can even be used as not in place of, I will not say that because उसमें बहुत सारे legal को 164 के level तक उसको लेके जाया जा सकता है, because this is what the victim told the medico legal officer at the first instance. ये FIR का जो statement होता है 161 वाला, और ये उसके बाद और फिर 164. So you have like now 3 levels of cross checking the entire thing. तो कोशिश की है, it's like this कि सिम में हमने implement किया है इसको, and it is being used. हमने बात की रेप के बारे में, हमने बात की जिनसी तशद्दुद के बारे में, हमने बात की in hindsight about GBV, we talked about minors, ठीक है, we talked about all of this and how पाकिस्तानी cases essentially आप देखती होंगे, अखबार पढ़ते होंगे हम सब, कि cases की असल में nature क्या होती है. आपको पता होता है कि जिनसी तशद्दुद हुई, कोई मामला ख़राब हुआ, रेप हुआ और उनको मार दिया गया. Okay. या ऐसे sometimes ऐसी situations होती हैं that some people have committed suicide as a result of whatever they were faced or whatever they were subjected to. In particular situations में, is obtaining an autopsy particularly challenging for you? See, in my experience, murder cases which involve rape, either of minors, boys and girls, or of an adult woman, or a trans, we are at a better position of collecting the samples, because the person has not been able to wash himself or herself. And they're challenging in the sense that all injuries need to be documented perfectly. But at the same time, it's a bit easier because, the person is not moving around. So we have a better leverage. थोड़ा सा जो इफेक्ट आता है वो ये आता है इनका रेप मर्डर का या रेप सुसाइड का. पहले मैं रेप मर्डर की बात करूं, इसमें आउटरोर होता है पब्लिक का बहुत ज़्यादा, एक अप्रोर, वी आर गेटिंग एन अप्रोर एंड वी आर सॉर्ट ऑफ short of time in the sense कि पब्लिक को जल्दी जल्दी आंसर्स चाहिए होते हैं. सो दैट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन अस. बट एक बात मैं आपके फोरम से बोलूं कि जो मेडिको लीगल ऑफिसर है या जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, दे आर ऑल वर्किंग
in a time frame. They need time to, you know, sort of process everything. उनको भी समझने में टाइम लग रहा होता है. तो वहाँ पर जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है ना, वो टाइम का आता है सबसे बड़ा, because there's a pressure on us, abhi report, which is sometimes not possible, most of the times not possible. So ये बहुत बड़ा चैलेंज है. दूसरा चैलेंज ये हो जाता है कि in such cases, especially अगर मैं रेप सुसाइड की बात करूँ, तो उसमें what was the reason for suicide? कोई नहीं बॉडी बताएगी आपको. वी हैव टू, यू नो, हेयर व्हाट द डेड आर टॉक, व्हाट द डेड आर टेलिंग अस. इट्स माय इयर्स दैट हैज टू, यू नो, व्हेन द डेड टॉक टू मी, आई नीड टू हेयर. सो इफ अ गर्ल इज कमिट सुसाइड, एंड रीजन क्या है उसके पीछे, और मैं फाइंडिंग्स में मुझे कुछ मिल जाता है कि येस देयर आर फाइंडिंग्स ऑफ रेप ऑन द बॉडी, या देयर आर फाइंडिंग्स ऑफ क्रॉनिक या लॉन्ग स्टैंडिंग सेक्सुअल अब्यूज ऑन अ 14-year-old गर्ल. सो दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी understood. What was the reason behind the suicide? So that is when we come to the psychological autopsy. So psychological autopsy is something where I will be autopsying the mind of the person. I'll narrate a case here, not narrate, actually just share it. There was this girl, 15 years old. Her body was brought to me. I was on duty at Civil Hospital Karachi. Then I was a senior WMLO, and she was in full rigor, meaning the body was totally rigid. It was Shab-e-Barat, the day after the Shab-e-Barat, and she had taken halwa in which she had mixed rat poison. So बॉडी लेकर आए, एंड आई वाज टोल्ड कि जी बॉडी है, तो 174 के पेपर्स जो पुलिस बनाती है वो हमें दिया. एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग टू बी अ रेगुलर केस कि बच्ची है जिसने सुसाइड कर ली. आई एम टॉकिंग अबाउट 2013. दैट वाज द स्टार्ट ऑफ माय फर्स्ट साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी एक्चुअली. सो फुल राइगर में, और उसका हाथ ऐसे बंद है, और जब मैंने हाथ उसका खोलने की कोशिश की है तो अंदर उल्टे हाथ पे लिखा हुआ था कॉपी ज़रूर पढ़ना मार्कस उससे बॉल पॉइंट पेन से. I asked the relatives, I asked the investigating officer, कॉपी कहाँ है इसकी? So they said कौन सी कॉपी? तो उसकी बहन भी साथ में थी, बहन थी, नानी थी, भाई था छोटा, और अब्बा थे उसके साथ में, तो 2-3 और रिलेटिव्स थे. आइयों ने कहा कि जी कॉपी तो नहीं पूछते हैं. बहन ने बताया कि कॉपी है इसकी चारपाई के नीचे संदूक में होती है. सो आई सेड कॉपी लेकर आओ. सो कॉपी में अच्छी मोटी सी कॉपी थी, और उसमें मेहंदी के डिज़ाइन और फूल पत्तियाँ एंड शेर व शायरी जो इस उम्र की बच्चियाँ करती हैं, और उसमें बहुत सारी बातें तारीख के साथ उर्दू में बहुत सारी बातें. और उनसे पता ये चला कि ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 months उसका कोई रिलेटिव उसको सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहा था. एंड बहन न्यू अबाउट इट, बट दे डिडंट नो व्हाट टू डू, because they feared कि अगर हम बोलेंगे तो हमें कुछ, तो that drove her to suicide. That's how you do a psychological autopsy. Did someone try to hide this evidence from you? No. They didn't even know. Most of them, they didn't even know. And in fact, मैंने investigating officer से यही कहा था कि मुझे वो कॉपी ला के दो, ढूंढो मुझे कॉपी ला के दो. I still have that copy as a reminder कि how important it was for me to, you know, delve deep into it. Why did she commit suicide? I think this was one of those defining moments of your career, if you will, yes, where you realized the importance of what you do and the intensity of what you do. This was the start of psychological autopsies for me. I've done 37 since then, and psychological autopsies require, you know, going the extra mile. It includes talking to the relatives, it includes talking to the co-workers, it includes, you know, going and visiting the place obviously with consent. Some people like to talk, some people don't want to talk, and that's why I've only managed to do in about 22 में हम खड़े हैं, तो 13 से आप 22 तक लगा लो, only 37 psychological autopsies. So that's the taboo. See, it again emphasizes the taboo that we have in our society. We need to work on that too, extensively. We need to work on that too. Thank you so much for your time. Thank you so much. It was really nice talking to you about all of this. Same. I got to learn a lot of things from you today, and hopefully this has been a really nice experience for you as well. Lovely. Thank you so much for being here on our side. Thank you very much. Thank you.